even after the explanation, I have asked you several questions so to make sure that whether you have understood the lesson or not. So after asking the questions, I suppose that you should, what I got to know is you all now have understood lesson number 1 very clearly. So anyways, now we are going to solve the question answers. Just if I'll give you the theoretical part, it will not do. You can't just mug up the answers. You must know the meaning of whatever you read over there. Many of the words are not, familiar to you all. So anyways, here I'm going to read the questions and I'll ask the questions to you. Today we will solve the objectives and it's a subjective part of our English lesson number 1. So get ready for my questions. So I repeat once more, unless I don't call out your name, you don't have to turn on your mic. खास ये याद रखना, you don't have to turn on your mic unless I ask you. Okay, so now I will present my screen and you will be able to then look into the screen and into the textbook. So textbook will be in front of you and you will be easily able to read the questions which I am reading here. So here is my screen on your screens and now here is the textbook in front of you. We just completed the explanation part of the 1-inch warrior. Now, before we start with the exercise, I'd like to ask you a few questions so that I get to know that my mic is very clear or not, or are you able to listen to me, or am I audible or not, and etc. So, my first question here will be to uh, Rizvi Fatima. Rizvi Fatima, I hope my voice is clear and can you speak to me, Rizvi Fatima? Rizvi Fatima, I repeat your name, Rizvi Fatima. If you can listen to me, please turn on your mic, Rizvi Fatima. Okay, moving on to the next, Bhimani Iram. Iram Bhimani, can you hear me? Iram Bhimani, if you can hear me, turn on your mic. Yes, sir. Yes, Good sir. afternoon. Yes, Iram Bhimani. Good afternoon. What is your name? What is your original name? My name is Tasmin Bhimani. Tazmin. Correct. Yes. Okay, Tazmin. I am going to ask you certain questions related to lesson number 1. Are you ready to answer? Yes. Okay, very good. So, were you there in my previous 2 lectures where I was explaining you lesson number 1? Tazmin, I can't hear you. Are you answering? सर मुझे आपकी थोड़ी देर पहले आवाज नहीं आ रही थी. Okay, anyways. So, Tazmin, tell me who was the main character, who was the hero of the story, the 1-inch warrior? Tazmin. ये 1-inch warrior जो स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर हु वाज द हीरो हीरो कौन था इसका इस कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी में तस्मीन तस्मीन कैन यू हियर मी अब ओके तस्मीन डू वन थिंग म्यूट योर माइक ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू काजल भोजानी काजल भोजानी काजल भोजानी कैन यू हियर मी काजल भोजानी am I audible to you सर yes सर बैकग्राउंड में बहुत आवाज आता है. I understand okay now can you hear me clearly beta यस. okay tell me your name फातिमा नायानी. Okay, Fatima Nayani. Now I'll ask you the question of the lesson 1-inch warrior. Are you ready to answer? Yes. Okay, my first question is who was the hero in this story 1-inch warrior? Who was the main character on which the story was based? मैम सर Yes, 1 minute. हाँ. yes. So you are taking help of your parents or brother or sister? Okay. Brother. Who is your brother? In which standard is he studying? Ninth. Ninth. In which school?
Yes. गुजराती Gujarati medium. Okay. गुजराती मीडियम Okay, please give me the answer, beta. सर मेरे को नहीं मिल रहा है नहीं, when I was explaining you, I explained you who was the main character. जब समझा रहा था तब आप नहीं थे? मैम सर मैं बुक गोत रही थी अभी मिली तो मैं Okay, पेज beta, नंबर listen. Okay, you have to repeat after me. मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? Will you do it? ओके यस So, first of all, Uzaira Khimani, turn off your mic. यस सर Uzaira Khimani, turn off your mic, please. यस सर मैं जिसका नाम लूं वही माइक टर्न ऑन करेगा। हर 10 मिनट में नहीं बताना पड़े। हेलो हेलो माइक ऑफ रखो हेलो। अपना। स्क्रीन आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन में दिखाई नहीं रहा हूँ, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। सर बशीर सर, एक मिनिट सर, पीसी मध्ये एक डिस्प्ले होईल, एक मिनिट 1 मिनिट। उजैरा खिमानी अपना कैमरा और माइक ऑफ करो। यस सर क्या यस सर, कब से बोल रहा हूँ मैं, ऑफ करो फटाफट, नहीं तो रिमूव कर देंगे ये ग्रुप में से। व्हाट इज दिस? सर मैं म्यूट करूं ना बेटा, आपको पूछ रहा हूँ अभी, रुको, इन लोगों को साइलेंस रहने दो। ओके ओके बेटा, नाउ स्पीक प्लीज। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बार बार बोलना पड़ता है। यस बेटा, टेल मी, मेन अभी मेरे साथ साथ बोलना। द मेन कैरेक्टर द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी ऑफ स्टोरी 1 इंच वॉरियर, 1 इंच 1 ईयर 1 इंच 1 ईयर नहीं बेटा, 1 इंच 1 इंच वॉरियर वॉरियर is is issue bossy. issue bossy. Okay, now mute your mic beta. Okay sir. Okay, my next question goes to Sipai Asif. Okay, Sohel Bhojani. Sohel Bhojani, can you hear me? Sohel Bhojani. Yes sir. What is your name? My name is Bhojani Zainali. Zainali. Okay, Zainali, tell me that where was Princess Sanjo and Ishu Bossy going? Where was Ishu Bossy and Princess Sanjo going? वो कहाँ जा रहे थे वॉक करके? Where were they going? Okay, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। इशू बॉसी, बोलो तो मुझे सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन रिपीट करो बेटा, चला रिपीट द क्वेश्चन। यस सर, पहले से बोलो। बेटा आपके पीछे से आवाज आ रहा है, बंद करो, माइक बंद करो, पीछे से आवाज आ रहा है, टर्न ऑफ योर माइक। ओके, स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन है, व्हेनेवर यू आर सिटिंग फॉर द ऑनलाइन स्टडीज, प्लीज रूम में शांति हो, ऐसी जगह पे बैठो सो वी कैन आस्क यू द क्वेश्चंस। ओके, वाई मुल्तानी, हु इज वाई मुल्तानी? वाई मुल्तानी? यस सर। यस, व्हाट इज योर नेम बेटा? My name is Multani Fatima. So Multani Fatima, now tell me, where was Princess Sanjo and Ishu Bossy going? Temple. Sure? Yes sir. Okay, very good Fatima, you are right. Okay, turn off your mic. So students, this way I will ask you the questions from the textbook. We will solve true or false, we will solve question answers.
Now you don't have to write. अभी कुछ भी लिखना नहीं है. I will send you written work in WhatsApp group. मैं आपको written work WhatsApp group में भेजूंगा. Now you just have to answer orally, verbally. अभी खाली बोल के आंसर देना है जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब, और जिसका नाम लूं उसको. So now I hope you are able to see my screen. Here I have opened the book, and now I'm going to open the objectives in the subjective part in the textbook. So here is true or false. मैंने कल true or false group में भेजे थे. I sent you the true or false of this lesson yesterday in the group, but फिर भी मैं पूछूंगा. So now the first question is, the boy was named Ishubasi because he was 1 inch tall. Now I will ask this. True. Who is this? पापा मैंने बोलू आपका नाम लिया. हाँ बेटा. ओके. मैम मैं नकवी. सर बोलू बेटा बंद करो ना माइक. बेटा बार बार डांटना नहीं पड़े. हाँ चालू में. ओके. नकवी जैद. नकवी जैद. नकवी जैद. सर. What is your name, Yes, Naqvi sir. Zaid? Yes sir. What is your name? Nakushabat Fatima. Okay, beta. Can you tell me can you give me the first answer? The boy was named Ishubasi because he was 1 inch tall. True. Sure. Yes sir. See, I have written true. Okay. So, okay. Turn off your mic. Mic बंद कर दो सब अपना. ये छोटे लड़के का नाम इशू बॉसी इसीलिए पड़ा बिकॉज द नेम इशू बॉसी मीन्स 1 इंच. इसीलिए इसका नाम इशू बॉसी पड़ा. सो दिस इज ट्रू. सेकंड क्वेश्चन. इशू बॉसी विश्ड टू गिव द सिटी विश टू गो टू द सिटी टू प्ले. इशू बॉसी को सिटी में खेलने जाना था. No. कौन है ये बेटा? False. Sir, false. श्योर. False. श्योर. False. Yes sir. False. ओके. Yes बस sir. बेटा. False. सुनो बेटा, सबको एक ही बार बोलने का. ओनली स्पीक वन टाइम. क्योंकि बार बार बोलोगे ना तो क्या होगा, मुझे सुनना ही नहीं देगा. आई विल नॉट बी एबल टू हियर. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इशू बॉसी सेल्ड टू द सिटी इन अ कप. कप में गए थे वो पानी के अंदर. False. फॉल्स. False. किस में गए थे? False. 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 लिसन, बाउल में नहीं गए थे तो किस में गए थे? हाउ डिड ही वेंट टू द अनदर सिटी? Both. सूप बाउल में. किसमें? सूप बाउल. बोलो सब. सूप बाउल. Soup bowl. Soup bowl. Soup ओके. bowl. वेरी गुड. Soup bowl. बेटा एक एक करके नहीं बोलने का, साथ में बोलने का. Okay sir. Turn Soup off your bowl. mic. कौन बोला ये बाद में? Okay sir. निकाल दूं ग्रुप में से? ओके. टर्न ऑफ योर माइक. जवाब देके माइक बंद कर दो. शट योर माउथ बेटा. लॉर्ड सांजो डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. लॉर्ड सांजो का घर अच्छा नहीं था. False. फॉल्स. No. वेरी गुड. False. False. इशू बॉसी fought with the giant to save the princess. True. 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 ओके. True. True. अभी माइक सबका बंद. True. माइक बंद. ये कौशिक हमीरानी कौन है? कौशिक हमीरानी. हमीरानी अपना माइक बंद करो.
Okay. Now, the question I will ask to Mahin Parmar. Mahin Parmar, can you hear me? Mahin Parmar. Only Mahin Parmar will speak. Yes. What is your name? My name is Ibrahim Parmar. So, Ibrahim, ये लॉर्ड सांजो का घर ब्यूटीफुल नहीं था? लॉर्ड सांजो डिड नॉट हैव ब्यूटीफुल हाउस? नहीं, उसका घर ब्यूटीफुल था. श्योर? Yes. Okay, very good. Okay, fine. Okay, now students, we are going to solve, tick the correct answer. सर, मैं अपना माइक बंद कर दूं? Yes, please. Okay, so now first question is, the man and the woman were blessed with a tiny boy. The man and woman were blessed with a tiny boy. उसका छोटा सा बच्चा था ना, तो छोटे बच्चों को इंग्लिश में टाइनी बॉय बोलते हैं. टाइनी बॉय. द मैन एंड वुमन वर ब्लेस्ड विद द टाइनी बॉय. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन, इशू बॉसी's मदर मेड हिम. ओके, नाउ I will ask the question to Mohammad Ali Merchant. Okay, Anjum Fatima Goani. Anjum Fatima Goani. Yes, sir. Can you read the second question? Yes. Please read it. issue was कब आएगा? कि mother made him. Means इशू बॉसी की मम्मी ने उसके लिए क्या बनाया था? Boat. बोट. ए बोट. बोट बना के दी थी ना? Yes, sir. एंड बेटा टेल मी, बोट किससे बनाई थी? हाउ वाज द बोट मेड? आउट ऑफ व्हाट इट वाज मेड? Bowl. सूप बोल. Bowl, लिसन sir. बेटा, बाउल नहीं बोलते, बोल बोलते हैं. बोल. Ball. Soup bowl. Correct. Okay. Turn off your mic. Sir. Very good. Very good. Turn off your mic. Okay. My next question I will ask to Zainab Rajani. Only Zainab Rajani will speak. Yes, sir. What is your original name, beta? What is your name? Rajani Mehndi Hassan. Mehndi Hassan. Can you read third question? Yes. Come on, read it. LSSUN. No, it is not L. It is I. Issue Wasi. Isuwasi and the Princess me the Giant plan on that we to there. the बेटा मेरे साथ there you way to the which is the correct answer? temple. Sure? Yes. Okay, you are right. Okay, turn off your mic. Okay. Okay, I would like to ask the fourth question here to here I think Anjum Fatima Goani has one doubt. Anjum Fatima Goani, I must tell you that whenever I'll ask you to submit the homework, on that day you have to submit. Don't worry about it. सर मुझे कब मेरी
बारी आएगी। सहल टपाली, अपना माइक ऑफ रखना। अभी बीच में बोलोगे तो मैं इसमें से निकाल दूंगा। नो वन विल टर्न ऑन द माइक। मैंने स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर के, बार बार नहीं बोलूंगा बीच में, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, सबकी जान आएगी। ओके, राज हार्डवेयर, हु इज राज हार्डवेयर? Raj Hardware, Yes, sir. what's your name? Yes, sir. My name is Dia Fatima. Okay, so can you read fourth question, beta? Soon, Issue bossy issue was you used said नहीं, this tiny sword sword to attack the princess, poke the giant, के kill the animals. सर मैं बोलूं? Poke the giant, बेटा राइट आंसर क्या है? poke the giant. What is the right answer, beta? Poke the giant. Very good. Now turn off your mic. Mic band. Okay, so मैं बोलूं? बेटा आपको इसमें से निकाल दें हम लोग बेटा, ग्रुप में से? डू यू वांट टू गो आउट ऑफ द ग्रुप? हाँ, आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि बीच बीच में मत बोलना, तो सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं, व्हाट इज दैट? इफ यू विल डिस्टर्ब अस वी विल रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप, फिर ऐड नहीं करेंगे। ओके, रसूल महिड़ा, हु इज इट? रसूल महिड़ा, रसूल महिड़ा, व्हाट इज योर नेम, फुल नेम? महिड़ा मोहम्मद शामी। महिड़ा मोहम्मद शामी। Zamin, Mohammed Zamin is your name, correct? Mohammed Zamin, read fifth sentence for me. Issue bossy became a well known, फिर क्या बन गया था issue bossy? At last what did he became? See, I have ticked the correct answer. What is it, Zamin? samurai. No, Samurai. samurai. Okay, samurai, very good. Okay, fine. So okay, now mute your mic, beta. Okay, now we will discuss question answers. I will ask you, you have to answer it to me. Whatever you know, you just have to answer, but I must tell you that I will call out the names. वापस बोल रहा हूँ, नाम बोलूंगा वही mic open करेगा. Only that particular student will turn on the mic. First question, just I will read. What did issue boss's father give him before issue bossy went to the city? मतलब issue bossy के पापा ने उसको क्या दिया? So this question I will ask to सहल सैयद. सहल सैयद. हाँ सर. Yes, you wanted to answer. बेटा एक बात ध्यान रखना. सर हाउ मेनी पेज? मैं बोलता हूँ तो बीच में नहीं बोलने का. Whenever I am speaking, you don't have to interrupt me. Okay, सहल सैयद, correct. बेटा मैं सबको पूछूंगा, सबकी बारी दूंगा. अगर आप बीच में बोलोगे तो I will remove you. Do you understand, बेटा? Do you understand, beta? Yes. Now answer the first question. What did issue boss's father give him when he was going to city? मतलब issue boss के पापा ने उसको क्या दिया था? फादर ने क्या दिया था उसको? नहीं, उसको वो लकड़ी दी थी, वो वाली लकड़ी. ओके बेटा, वेरी गुड. लकड़ी नहीं, नीडल की स्वॉर्ड दी थी ना. स्वॉर्ड मतलब तलवार. सो रिपीट आफ्टर मी. issue bossy issue bossy father
Father gave him gave him sword. word Word नहीं, SWORD, sword. sword When he was when he was going to going to the city. the city. Very good. Okay. Okay. Very good. Turn off your mic, beta. Now the next question is, how did Ishubosi pleased Lord Sanjo? Means Ishubosi ने Lord Sanjo को कैसे मना लिया? Now I will ask this question to Adnan Dholia. Only Adnan Dholia will turn on the mic. Adnan Dholia, if you can listen to me, please turn on your mic. Okay, I suppose there is some issue over there. Okay. Asma Sumra. Asma Sumra, can you hear me? Asma Sumra, can you hear me? Okay. So here. Okay, Moin Lakhani. Moin Lakhani. Yes, sir. Okay. Now, Moin Lakhani, can you give me the answer? Yes, sir. How did Ishubosi please Lord Sanjo? Means Lord Sanjo की कौन सी help कर दी Ishubosi ने? What help did Ishubosi did for Lord Sanjo? Lord Sanjo की कौन सी मदद की थी? लाकड़ी थी. No. When housefly came near Lord Sanjo's ears, Ishubosi killed housefly. Correct? Okay. Yes. Okay. Turn off your mic. Okay. Nakwi Z. Nakwi Z. Yes. Okay. Yes, sir. इसकी चार्जिंग जा रही है. Okay. Nakwi Z. Only you will speak. Okay. Now we will just directly go to the fourth question. What? Nakwi Z, can you hear me? What? आप बेटा सुन पा रहे हो मेरे What को? did the princess? Yes, sir. Okay बेटा, read. What did the princess do with it? What happened after that? Okay, पहले आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ. What did the princess do with it? Means princess ने उसके साथ क्या किया? उसके साथ मतलब उनको जो हैमर मिला था ना, हैमर, हथौड़ा, मैजिकल, उसके साथ उसने क्या किया? Do you know? Zed, Nakwi Zed? Nakwi Zed? उसने उसको बचाया. नहीं बेटा, जो He saved him. she hit it. Repeat after me. She hit it on the He hid it ground. on the हाँ, पता है ना, प्रिंसेस ground. ने जो हथौड़ा मिला, जो हैमर मिला मैजिकल, वो ग्राउंड पे जोर से मारा. Then what happened बेटा? फिर क्या मैजिक हुआ? What magic happened over there? The princess come out from the river. No, Ishubossi's height increased. Ishubossi फिर लास्ट में लंबा हो गया था ना? Okay, fine. Mute your mic. Okay. So students, now remember that this MCQ and question answers I will send in your WhatsApp group by today or tomorrow evening. Now we will move to the next lesson directly. मेरा दिख रहा है.
अरे सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। बेटा अपना माइक बंद रखो। Okay, students, listen. Now I will call out the name, and that particular student has to turn on the mic and read the poem for me. Now we are going to start the new poem. So first here, Burani 6115. Burani 6115. यस सर। Yes, what is your name, beta? पुरानी सकीना। Okay, Sakina, Good will you? afternoon, sir. Yes, good afternoon, beta. Very good afternoon. So, beta, can you read the poem for me? यस सर। So, first you have to read the title of the poem. What is the title of the poem? The land of the Bumbly Boo. Bambobo. Nah, what is Bambobo? Bumbly Boo. Bumbly. बेटा मेरे साथ बोलो, आ जाएगा. You will come to know how to pronounce it. Bumbly Bumbly Boo. Boo. Very good. So now, beta, can you see the photos on the screen? Yes sir. तो ऐसे ऐसे इंसान आपने देखे हैं? Have you seen these kind of human anywhere? Yes sir. No. ऐसे इंसान कहाँ पे होते हैं बेटा? आपका फेस ऐसा है? Okay, बेटा tell me, what is this? देखो मेरा एरो दिखाई दे रहा है? What is this? Yes sir. ये क्या है बेटा? Can you see my arrow? See यहाँ पे कौन है ये छोटा वाला? Squirrel. Squirrel. Okay, squirrel के squirrel. Okay beta, now listen. Now you have to read it from here. Okay, come on, start. Can you read? Yes or no? Okay. Burani? No. Okay, turn off your mic. Okay, so now here. सर मेरी चार्जिंग जा रही है। बेटा आपकी चार्जिंग जा रही है तो यहाँ पे बीच में मत बोलो प्लीज. ओके, अंजुम फातिमा गोवानी. अंजुम फातिमा गोवानी. Yes sir. Yes beta, can you read the poem for me? Sir. Beta, can you read the poem for me? Yes. Okay beta, read. Chalo, start. In the चलो बेटा फटाफट स्टार्ट करो, रीड करना. यहाँ पे रखा है. आई हैव केप्ट द एरो हियर. दिखाई दे रहा है बेटा? बेटा your mic is off. I turned off the bubble. Bumbly Boo. Bo. People. The people I White. read with a White. बेटा with and नहीं, blue सुनो. बेटा सुनो. White. pen. What? मेरे पीछे पीछे रीड करो बेटा, मेरे साथ रीड करो. ओके.
In the white, white and blue and near ball, never blow, ball, blow beta blow. ball, news, Beta suno. evening, Stop blow. reading. Yes, sir. Anjum Fatima Goani. बेटा मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? Okay. सर बेटा अपना माइक ऑफ करो. Sir. कौशिक हमीरानी अपना माइक ऑफ करो. Yes, sir. माइक ऑफ करो बेटा. सर अमीरानी मोइनुद्दीन रीड करना चाहता है. तो मैसेज में टाइप करने का बेटा. डोंट स्पीक लाइक दिस. आवर क्लास इज गेटिंग डिस्टर्ब. Okay, sir. I will give chance. Okay. Now Qazi Aslam. Qazi Aslam. Yes, sir. Can you read the poem for me if I show you the book? Yes. Chalo, I have kept the book here. Start reading. In the land of Bumblebo, the people are red, white, and blue. They never blow noses or ever wear clothes. What a What a sensible sensible thing to do in the land of Bumblebo. You can buy lemon pie pie. Beta pie. It is pie. to the zoo. At the They zoo. give away foxes in little pink boxes. The bottles and bottles of Dandelion dandelion stew. stew. Okay. Very good. Now, do you want to read? Yes. Okay, continue then. Okay, beta. Yes. In the land of Kamlebo, you never see a A gnu. gnu, but Thousands of cats cats wearing trousers trousers and hats made of pumpkin and pelican glue. Oh, the bumblebee that's the place for me and you. So hurry, let's run. The train leaves at 1 for the land for the land of Bumblebee. of the Bumblebee. The wonderful Bumblebee Bobo. The wonderful Bumblebee Spike Milligan. So beta ये Spike Milligan कौन है? Who is this Spike Milligan? I don't know. It's the name of a poet जिसने ये लिखा है. Okay. Yes. Okay. So beta Okay. listen. Hmm? So what is this in the picture? See, who is this?
Fox. Sure? Yes. Who is this? Fox. Okay. What is this? Cat. No, see. Bottle. Bottles. Two bottles are there, no? Yes. Correct. And who is Yes. this? Boy. And this? Girl. And this is you? No. Okay, I'm joking, beta. Okay, fine. You read excellently. You read very good. Fine. Now Okay. I'll give chance to the other student for reading the poem. Sir, I can mute my mic. Yes, beta. Very good. You can. Okay, students. So that's all for today. Now, just listen to my instructions. मेरी बात सुन लेना एक बार. जो मैंने कल आपको ट्रू और फॉल्स दिया था ग्रुप में, आई सेंड ट्रू और फॉल्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. वो आपको कल तक सबमिट करने हैं. बेटा प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट. मलकानी, नाजिर Malkani, can you turn off your mic, beta? Okay. So I have sent you the. Yes. Turn off your mic, Nazir Yes, Malkani, sir. please. So students, I have sent you the true or false. So now today I am going to send you the other objective part, that is MCQ and hard words. I will send you today in the group. Okay, so you will get everything in the group, and जब भी submit करना होगा, whenever you have to submit, I will tell you. I will put the date in the group. So don't worry. जब तक मैं नहीं बोलूँ तब तक आपको submit नहीं करना है. I will give you daily the homework, whatever it is related to the lesson. So now from tomorrow, most probably I will start the explanation of the new poem, and then we will do the grammar part. Okay. Now thank you to listen to me and wait for the other teacher to join the class. Until then, enjoy the day and maintain silence, please, in the class. Bye. Bye. Sir, bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Sir,